Hello friends, we continue our lecture series of electromagnetic wave with physical interpretation. So last time we were discussing about the scalar potential, magnetic potentials, and then we formulate Maxwell's equations in terms of scalar potential and magnetic vector potential. And I told you that if we somehow solve the scalar potential and vector potential, that is phi and A, we can get electric field and magnetic field using these two formulas. So let's just check it out, that E equals to minus grad phi minus delta del T, B equals to curl of A. We get this equations, that is del square phi minus 1 by c square del 2 phi del 2 equals to minus rho by epsilon naught. Del square A minus 1 by c square del 2a del t2 equals to minus j by epsilon naught into c square, provided the Lorentz gauge condition, that is del dot a equals to minus 1 by c square del phi del t. Okay, now we want to have a solution, have a look on the solution of a and phi. Look, if you take any, if there is no, what do you mean by these equations? I mean, this is the phi, that is the potential, and what does it represent with this right hand side term? This represents actually the source term. How so? You see here, whenever in free space, we can consider that rho equals to 0, where rho is the free charge density and j is the current density. So rho and j, in vacuum rho and j is 0. So we have discussed that although there is no rho and j term, but the wave can propagate with the general solution that phi is a general solution, that del square psi minus 1 by c square into del 2 psi by del t2 equals to 0, where the solution of psi is the function of x minus ct, plus as well as it can be expressed as x plus ct, where x minus ct representing a wave traveling along the positive x direction, and x plus ct representing a wave along negative x direction, positive x and negative x. Okay, so here although there is no charges, there is no source term, but the electromagnetic wave can propagate with a velocity c. That's why the EM wave needs no medium for propagation. So now continue with this new source term, with the new source term, with this source term introduced, and we want to get the solution of phi and a. So if you write phi or a, and in general as a equation with the wave psi, that is you will write del square psi minus 1 by c square del 2 psi by del t2 equals to minus s, where s is some kind of source term. Now look here, the charge density is producing the scalar potential and the current density is producing the vector potential. That's the important thing here. So whenever you have a source potential, we all have solved that whenever psi, this source is 0, then the equation of the psi may be f of x minus vt, x plus vt, as well as the equation of psi, that is the solution of psi, can also we put like this, that will be function of t minus r by c divided by r. What do you mean by that? If we put our solution psi in this equation, that is del square psi minus 1 by c square del 2 psi del t2 equals to 0, let us suppose this is 0, and we put the solution f of t minus r by c divided by r in this equation, we get the solution for all values of r until r is equals to 0, until at the point origin the solution diverges, because it will tends to infinity. So this wave equation, this psi, this can be a solution of this equation with the source term, where the source is exactly pointed at r. So this is the general solution of this kind of equations, where this is the inhomogeneous equation
where the right hand side term is representing the source, and we can solve it and by the using of green function. So we can solve it like this way, and we get the solution in general solution of f of function of t divided by r, where r is the location of the source term. Okay, now why I have written t minus r by c? Why is it not f of t? So look here, we are considering the charge is moving, so it has some velocity c. Okay, so whenever if I take a charge that is moving with whether it is c or v, we will have some retarded potential. What is that? Before going to that thing, let us take non-relativistic solution where the velocity of the wave, that is suppose a charge is moving and it has some velocity v and the velocity is far less than c. What will be the case? So here suppose an observer is sitting at point O and the charge is at point Q. Now at some instant it was at point Q and it radiates electric field lines is radially outward towards 1, and now it has some velocity, so it will come at point 2. Meanwhile the radiation, the electric field lines or the radiation will take some time to travel to reach up to point A. The charge point has to travel also this point 2. So this point, the people which is sitting at O, 1, that is our observer, he has no clue that the charge has already come here. He will get the signal that the charge emit at an earlier position, that is before it will the radiation will take the time to travel that much time, that charge will take the time to travel from distance 2 prime to distance 2. Okay, I think I can make you understand. For more clarification, I am drawing another figure that suppose you have a point source here Q and you are observing the field and you are observing the field lines sitting at point O. So the field lines that are emitting, it will take some time to reach to you. Mean that time t will also reach at position let's suppose this is position 1 and it is position 2. So you don't have any knowledge, so you will get a retarded potential, that is potential of a earlier time. That is, if it will take a time t to travel a distance r by c, to travel a distance r, so the potential you will get, that is of t minus r by c. This because the potential, the field lines will itself take some time to reach up to you. So you will get the information at a time earlier, and the earlier time is the t minus r by c. That's why it is called retarded potential, because the time it will take to travel from the source to the observer. So it is a finite time. That's why the information which I get at time t, the information is of earlier time, that is t minus r by c. Hopefully you all understand. Now we all know that the Coulomb equation, the Poisson equation, okay, del square phi equals to minus rho by epsilon naught. So if we ignore these terms, del 2 phi, del t2, del 2 by del t2, it will be static case. There is no variation of phi and a with respect to time. This equations belongs to the Poisson equation. This equation belongs to the Poisson equation with some source terms. So in general, after solving for phi and a, with considering that the velocity of the charge v is less than c, that is non-relativistic case, we can write phi at the point 1, that is you are observing, is the integration of rho theta divided by 4 pi epsilon naught, and a
at the point 1 is integration j d tau divided by 4 pi epsilon naught c square into r. Okay, this is a general solution. So just like this, in this way, I mean, if it is a general solution of this kind of equation, so with the analogy we can write these things with the consideration of the retarded time. So these are called the retarded potentials. Now if you also consider the relativistic effect where V is comparable to C, the consideration, the potentials you will calculate, the retarded potentials you will calculate for phi and A you will get, and that was calculated by Lienard-Wiechert. So that is called as Lienard-Wiechert potentials. So this is the in general potentials for the potentials. This is the in general potential for, or the retarded potential for considering the relativistic effects also. So this is totally classical consideration. Now we have a deep questions that, okay, we know electric field, we know magnetic field from A and phi, but how radiation is produced? What is responsible for the producing of EM wave? So let us look at it. Now अभी मैं जो डिस्कस करने जाऊंगी, आई विल डिस्कस इट इन बोथ लैंग्वेजेस, लाइक हिंदी में भी बोलने की डिस्क्राइब करने की कोशिश करूंगी और इंग्लिश में भी, ताकि आप लोगों को समझ में आए. हमारे पास क्वेश्चन था हाउ रेडिएशन इज प्रोड्यूस्ड, कैसे रेडिएशन जनरेट होते हैं. आप सबको पता है कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर स्टेशनरी है, इफ इट इज स्टेशनरी देन इट डजंट रेडिएट, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज, इट डजंट रेडिएट. अगर इसके पास कोई कांस्टेंट वेलोसिटी है, इफ इट इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, then the particle, charge particle will also not radiate. But if the charge particle accelerate, if you have a charge and it is accelerating, then it will produce electromagnetic field. अब ये आपने सुना होगा कि चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते, जनरेट करते, बट कैसे करते? दैट वाज आवर क्वेश्चन. नाउ सपोज यू हैव अ चार्ज, आप मान लीजिए आपके पास एक चार्ज है जो कि पॉइंट ओ पे है, ठीक है. अब आपने क्या किया, इसको एक्सेलरेशन दिया फॉर अ सर्टेन टाइम डेल्टा टी, सो इट विल रीच एट दैट मोमेंट, इट विल रीच एट द पॉइंट ओ प्राइम. एक्सेलरेशन के वजह से ओ से ओ प्राइम तक पहुंच गया. फिर आफ्टर रीचिंग ओ प्राइम इट इज ट्रैवलिंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी ई. बस ये चलते जा रहे हैं विद द कांस्टेंट वेलोसिटी यू के साथ. मीन्स आपके जो एक्सेलरेशन है वो बस इतने ड्यूरेशन के लिए था डेल्टा टी, और फिर ओ प्राइम से ओ डबल प्राइम जाने के लिए जो कांस्टेंट वेलोसिटी मैंने इसको दिया है वो ओ प्राइम से ओ डबल प्राइम जाने के लिए टाइम टी लगाया इसने. अब आपको देखना है कि इस डेल्टा टी के वजह से हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड्स में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में क्या डिफरेंस आ सकती है. दैट इज द मेन फिजिक्स हियर, कि कैसे हमारे पास रेडिएशन जनरेट होगी. नाउ सपोज यहाँ पे जो चार्ज एट नो इनिशियल टाइम पे, यहाँ पे चार्ज जो है वो स्टेशनरी था बिफोर गेटिंग एक्सेलरेशन ए. सो इट हैज सम field lines for any charged particles. If it is positive then radially outward, and if it is the charge is negative then field lines will be radially inward. तो यहाँ पे चार्ज क्योंकि मैंने पॉजिटिव लिया है, दैट्स वाई यहाँ पे जितने फील्ड्स है दैट इज रेडियली आउटवर्ड. अब ये फील्ड यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगाएगा. मान लीजिए अगर मैं एक स्फीयर कंसीडर करिए, बिकॉज चार्ज जो है यहाँ पे 2D में सर्कल जैसे मैंने ड्रॉ किया, बट एक्चुअली दिस इज अ स्फीयर के बीच में एक चार्ज रखा हुआ है, वो एक r डिस्टेंस पे मैं मान लो बैठी हूँ, तो मैं एक स्फीयर कंसीडर करूँगी जहाँ से स्फीयर के रेडियली आउटवर्ड चार्जेस फील्ड लाइंस आ रही है. तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में इसके डिस्टेंस जो है वो r इक्वल्स टू सी इंटू टी प्लस डेल्टा टी, इतना टाइम पे वो r डिस्टेंस तक ट्रैवल कर सकती है. सो यहाँ तक लोगों को जो फील्ड लाइंस मिलेगी फॉर दिस टाइम t प्लस डेल्टा टी, वो इस q के वजह से होगी. बट इस q ने t प्लस डेल्टा टाइम में ऑलरेडी o डबल प्राइम तक पहुँच चुकी है, जो कि इस वाले वर्ल्ड के लोगों को पता भी नहीं है. ठीक है, आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ.
जैसे यहाँ पे फील्ड थी, चार्ज बैठी थी, इसने इनिशियली इसके फील्ड लाइन सारे रेडियली आउटवर्ड है। अब ये पहुंचने में जितना टाइम लगाएगा वो है c इंटू टी प्लस डेल्टा टी। इस मूव टाइम पे वे कहाँ तक पहुंच सकती है, कितने डिस्टेंस ट्रेवल कर सकती है, ये फील्ड लाइंस ट्रेवल कर सकती है इतने डिस्टेंस तक। और मेन दैट टाइम उसी मोमेंट उसी टाइम पे टी प्लस डेल्टा टी टाइम पे ये चार्ज जो है उसकी एक्सेलरेशन वेलोसिटी की वजह से दैट आल्सो ट्रैवल्ड फ्रॉम ओ टू ओ डबल प्राइम। बट इस वाले दुनिया को ये खबर तक नहीं है कि ये क्यू ओ से ओ प्राइम तक पहुंच चुकी है। बट क्योंकि यहाँ पे भी हमारे पास जो ओ डबल प्राइम पे भी चार्ज की वेलोसिटी है दैट इज कांस्टेंट वेलोसिटी, तो कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए भी जैसे स्टैटिक चार्ज के लिए भी रेडियली आउटवर्ड फील्ड था, कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए भी यहाँ पे रेडियली आउटवर्ड फील्ड होगी। बट आप देखो जो चार्जेस हमें यहाँ पे जिस मोमेंट में मिल रही है उसी सेम चार्ज की फील्ड लाइंस उसी सेम टाइम पे हमें यहाँ से भी मिल रही है ये अंदर वाले लोगों के लिए। सो डेफिनेटली देयर इज अ रिलेशन बिटवीन दिस फील्ड लाइन एंड दिस फील्ड लाइन, क्योंकि वो सेम चार्ज की फील्ड लाइन है। अब यहाँ के लोग यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ के लोग यहाँ पे देख रहे हैं, तो इन दोनों के बीच में जो जंक्शन है मीन्स आपकी जो फील्ड लाइंस है दैट हैज बेंड just like this, just like that, the field lines is going from here to here. So field lines are bending. That is the basic physics, that if you have a crank in the field lines or the curve in the field lines, that will produce a electromagnetic wave. This is the difference between the circumference. मान लीजिए आपने एक circumference r इक्वल्स टू सी इंटू टी प्लस डेल्टा टी के लिए सर्कमफेरेंस ले लिया और दूसरा आपने ओ प्राइम पे लिया है, वो इन दोनों के बीच में इन दोनों स्फीयर के बीच के जो डिफरेंस है सर्कमफेरेंस के डिफरेंस है दैट इज डेल्टा टी। ठीक है, अब देखो हमें देखना है कि इन बिटवीन द सर्कमफेरेंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कंपोनेंट्स क्या क्या होगी। एक तो जो r के पैरेलल है दैट इज ई पैरेलल ले लिया मैंने, और जो r के परपेंडिकुलर है मैंने उसको ले लिया ई परपेंडिकुलर, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज लाइक दिस। नाउ आपको अभी ये चीज़ देखना है कि ई पैरेलल एंड ई परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी होगी। उसके लिए पहले आप यहाँ से इस डिस्टेंस को देख सकते हो कि अगर ये आपके पास u है तो अगर आप इस डेल्टा टी को बहुत ही छोटा मानते हो तो आप इस पूरे डिस्टेंस को आप u इंटू टी मान सकते हो, क्योंकि t प्लस डेल्टा टी, हालांकि ये t प्लस डेल्टा टी है बट क्योंकि आपने डेल्टा टी को बहुत ही छोटा लिया और t को बहुत ही बड़ा लिया, सो u इंटू टी प्लस डेल्टा टी को आपने अप्रॉक्सीमेटली u इंटू टी मान लिया। सो दिस डिस्टेंस इज u इंटू टी, और ये वाले जो डिस्टेंस है वो u के जो कंपोनेंट्स है दैट इज परपेंडिकुलर टू r, ये आपकी r वेक्टर है और यहाँ पे u की कंपोनेंट जो है दैट इज u परपेंडिकुलर इंटू t। ये वाली डिस्टेंस हो गई आपकी u परपेंडिकुलर इंटू t, जहाँ पे u परपेंडिकुलर है द कंपोनेंट ऑफ u परपेंडिकुलर टू द रेडियल डायरेक्शन। ओके, सो आप देखो यहाँ पे आपके पास ये वाली लेंथ हो गई u परपेंडिकुलर इंटू टी और ये वाली लेंथ हो गई डेल्टा इंटू टी। क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल जो है दैट इज सिमिलर ट्राइंगल्स, तो हम लिख सकते हैं कि e परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय e पैरेलल इज इक्वल्स टू u परपेंडिकुलर t डिवाइडेड बाय c इंटू डेल्टा टी। दिस e परपेंडिकुलर बाय e पैरेलल कंपोनेंट इक्वल्स टू u परपेंडिकुलर t डिवाइडेड बाय c इंटू डेल्टा टी। अब आप u इक्वल्स टू a इंटू t, acceleration into time. Now u perpendicular equals to a perpendicular into delta t, because a perpendicular a into delta t, because this acceleration is only within delta t time. So you put this value a perpendicular delta t into t divided by c into delta t. So a perpendicular t by c, that is if you write a equals to t equals to r by c, so here you replace t with r by c, you get a perpendicular into r by c square. So finally you get e perpendicular equals to, if we don't take minus sign, let us forget about minus sign, I will explain why I have written minus sign. E perpendicular equals to a perpendicular by c square into
this is a function of t prime into q by 4 pi epsilon naught r. Now you have a question that how you write this. Okay, let me discuss why I write this. E perpendicular equals to a perpendicular r by c square into e parallel. If I take e parallel to this side, so what is e parallel? See, e parallel मतलब है जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी रेडियली पैरेलल है, मीन्स ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज ई पैरेलल. अब यहाँ के लोगों को तो कोई खबर भी नहीं है कि हमारी चार्ज जो है यहाँ तक पहुँच चुकी है. ये क्या सोचेगी, here there is a charge q and that charge, due to this charge electric field lines are going radially outward. तो ये सिंपली क्या करेंगे, गॉसियन पिल बॉक्स लेंगे. उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड को जस्ट कूलम लॉ लगा देंगे. तो उनके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड की कंपोनेंट है दैट इज ई पैरेलल कितनी हो जाएगी, q by 4 pi epsilon naught into r square, क्योंकि इनके लिए परपेंडिकुलर कंपोनेंट तो कुछ है नहीं और यहाँ पे भी इनसाइड कोई चार्जेस है नहीं. तो जितने भी चार्जेस है वो बस इस पॉइंट चार्ज के लिए है, इस क्यू चार्ज के लिए है. तो वो एकदम सिंपल कूलम फोर्स से आ जाएगा, कूलम्स लॉ गॉस लॉ से आ जाएगा कि हमारे पास जो ई पैरेलल है वो q by 4 pi epsilon naught into r square हो जाएगा. अब यहाँ पे हमें इस वैल्यू को पुट करना है, दैट इज ई परपेंडिकुलर इक्वल्स टू a perpendicular r by c square into q by 4 pi epsilon naught into r square. अब r कैंसिल आउट हो गया तो आपके पास मिल गई ई परपेंडिकुलर कंपोनेंट, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड की जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है दैट इज अलोंग दिस डायरेक्शन, वो आपका a परपेंडिकुलर q by c square into 4 pi epsilon naught r हो गया. अब यहाँ पे स्टैंडर्ड नोटेशन, यहाँ पे माइनस साइन क्यों है, क्योंकि एक्सेलरेशन आपकी इस डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी नीचे की तरफ है, जबकि एक्सेलरेशन अपवर्ड है. तो इन दोनों का जो डायरेक्शन है बिल्कुल ऑपोजिट है. दैट्स व्हाई द नेगेटिव साइन हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड. ओके, सो यू हैव टू नाउ अंडरस्टैंड दैट द व्हाट इज गोइंग हियर. ई परपेंडिकुलर के कंपोनेंट्स जो है वो किस किस चीज पर डिपेंड कर रहा है. अब देखिए, ई परपेंडिकुलर कंपोनेंट दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स वो डिपेंड करता है प्रोपोर्शनल टू ए परपेंडिकुलर. ए परपेंडिकुलर मीन्स लिख सकते हैं ए साइन थीटा, दैट इज कंपोनेंट ऑफ द एक्सेलरेशन अराउंड द परपेंडिकुलर डायरेक्शन, प्रोपोर्शनल टू चार्ज, प्रोपोर्शनल टू 1 by r. अब देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की वेरिएशन क्या हो रही है, साइनोसॉइडल वेरिएशन हो रही है. आप याद करो या लिंक करो कि कभी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को जब आप ड्रॉ करते हो तो आप कैसे करते हो, x y z, जिसमें आप इलेक्ट्रिक फील्ड की वेरिएशन अगर साइनोसॉइडल लाइक दिस लिया, मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन लाइक दिस लिया, और प्रोपगेशन किस डायरेक्शन में होगी, इन दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में. सो लिंक कर सकते हैं आप कि यहाँ पे कैसे आपके पास जो वेरिएशन आ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड की, सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड की वेरिएशन भी सेम आएगी, क्योंकि B हमारे पास जो होता है वो E by C होता है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो जो वेरिएशन यहाँ पे दिख रहा है, सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड की भी सेम वेरिएशन दिखेगा. और आपके पास जो साइन थीटा है उसके वजह से आपके फील्ड में जो है आप अलोंग, अगर साइन थीटा इक्वल्स टू 0 हो गया तो ई के परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स क्या हो गए, 0 हो गए. मतलब हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है. अगर साइन थीटा इक्वल्स टू 1 हो गया तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट कितना हो गया, मैक्सिमम हो गया, क्योंकि साइन 90 डिग्री 1 हो जाएगा. तो साइन 90 डिग्री, अगर 90 डिग्री में देख रहे हैं साइन थीटा 1 हो गया तो मैक्सिमम हो गया. और अगर थीटा की वैल्यू इन बिटवीन है, मतलब 0 to 90 डिग्री के बीच में है, तो आपको इन बिटवीन फील्ड दिखाई देगा. सो आपके पास, इसका मतलब क्या है कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपके पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिल रही है. परपेंडिकुलर डायरेक्शन मीन्स जहाँ पे वेव प्रोपगेट कर रही है पैरेलल डायरेक्शन में, दैट इज ई के परपेंडिकुलर अगर 0 हो गया, मतलब थीटा इक्वल्स टू 0, जिस तरफ हमारी r है दैट इज थीटा इक्वल्स टू 0.
सो उस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन पे हमारी वेव प्रोपागेट कर रही है, वहाँ पे हमें कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिल रही है, बिकॉज वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की कंपोनेंट जीरो है। दैट्स व्हाई इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा प्रोपागेशन वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है। सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड भी हमारे पास जीरो मिल जाएगा, क्योंकि थीटा जीरो हो जाएगा अलोंग द प्रोपागेशन डायरेक्शन। सो हमेशा ये वेव में के propagation vector always perpendicular to E and B, because we do not get any electric field, magnetic field along the direction of propagation, where E perpendicular will be zero, similarly B perpendicular will also be zero. Where in the field of the electric field component will be zero, and that is E के perpendicular component field. Okay, so here you will find out the physical realization of the Maxwell field. Now how I can introduce that how radiation is produced. आपको पहले जो डायग्राम बनाई थी वहाँ पे दिखाया गया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में सर्टेन कर्वेचर आ रही है, किंक आ रही है। तो वो जो किंक आई थी इन दोनों सर्कमफेरेंस के बीच में, जो जिसकी वैल्यू थी c इंटू डेल्टा टी, जो डेल्टा टी ड्यूरेशन में मैंने एक्सेलरेशन एक्टिव किया था फॉर द चार्ज पार्टिकल, वहाँ पे हमारी फील्ड ऐसे कर्व हो रही थी, बेंड हो रही थी। ये भी रेडियली आउटवर्ड था, वो भी रेडियली आउटवर्ड था, बट सर्टेन इन दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारे पास एक कर्वेचर आ गई। तो यही कर्वेचर, यही जो सर्कमफेरेंस है, अगर यही c टाइम पे मूव करे, दिस एज इट विल मैनिफेस्ट एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जहाँ पे भी आपके पास एक्सेलरेटेड चार्ज है, लाइक आपके पास अगर एक्सेलरेटेड डाइपोल है, तो वो कैसे रेडिएट करते हैं, क्योंकि जो डाइपोल, एक्सेलरेटेड डाइपोल मीन्स वहाँ पे पी डॉट की टर्म आ जाएगी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड में। इट इज फॉर द स्टैटिक डाइपोल केस dp dt is zero, but for the dynamic dipole case means dipole is oscillating, the dp dt will be non-zero for the dynamic case। वहाँ पे भी आपके पास जो डाइपोल लाइंस मिलेगी, वो आप देखना कि वहाँ पे कर्वेचर इंट्रोड्यूस हो जाएगी। जहाँ पे भी फील्ड लाइंस में कर्वेचर आ रही है, उस फील्ड लाइन को आप एज एन इंट्रोडक्शन ऑफ द EMF सोच सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडेज क्लास। अगले क्लास में आई विल डिस्कस मोर अबाउट दिस एंड आई विल मैनिफेस्ट इट मोर एंड आई विल टेल यू व्हाट इज स्कैटरिंग एक्चुअली। सो थैंक यू।